Hello, sir. Yes, sir. Hello. I have few questions from the students. Are you Okay. free to answer it? You can ask me those questions. क्या ACCA या CMA जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं? और ACCA या CMA क्वालिफिकेशंस के साथ कैन स्टूडेंट्स हैव अ सक्सेसफुल करियर अहेड? वेल, ACCA या CMA दोनों बहुत फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशंस है एंड यू कैन कंप्लीट इट एज पर योर ओन पेस एंड डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इन. Now talking about making a successful career ahead, एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है. नंबर 1, यू शुड इम्प्रूव योर नॉलेज, जो नॉलेज आपको ये क्वालिफिकेशन से आएगी. नंबर 2, you should improve on your skill set which will give more support towards the knowledge which you are gaining right now. जैसे कि learning some technical skills which will be working towards the finance and accounting side, and also developing your soft skills, your communication skills, your interpersonal skills, really important to make a successful career. And the third thing is you need to develop and improve a never giving up attitude in yourself. If you have all these three, these three you need to develop it comprehensively all together. It should not be in part wise, like now I'll improve knowledge, then skill set, then attitude. It's not like that. You should develop all these together on a regular basis. Knowledge, you will be able to do it with the qualification which you're doing. Skill set, with internships, by work experience, you will get it, and you can do it while doing these qualifications. And the third thing is never give up attitude. You should develop it and try seeking it from daily life routine which you are going through. Are you sure that the students will be able to get these qualifications and have a successful career ahead? Surety की बात ऐसी हो गई कि सपोज आप कोई जिम को जा रहे हैं, जिम को जाकर आप जिम की मेंबरशिप फी पे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे फिट कर दो. इज दैट डन? विल यू बी फिट देन? ऐसे थोड़ी होगा, आपको मेहनत करनी होगी जो आप चाह रहे हैं मिलने के लिए. दैट्स व्हाट यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स. आपको मेहनत करनी होगी. जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा, प्रॉपर मेहनत करेगा, स्ट्रक्चर्ड मेहनत, प्रॉपर कोच के साथ, ही विल गेट बेटर रिजल्ट्स. The more structured effort you put in, the much better results you take. The same goes with this qualifications and these skill sets also. The much better effort you put in, the much better input you give in from your side, आप जितना दिल लगाकर पढ़ेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. Well, that's a really good point. I hope that this video solves your query और आपकी भी. Cut it. हो गया. अब आप लोग बात कर लो जो करना है.